कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।
से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई। मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई। मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में। सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई। सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए। नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए। नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए। खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन
Om Shanti. Om Shanti. Am I audible, Sister Aroona? Your sound is a little soft, Sister Savita. Am I audible now? Is that okay now? It's very soft still now. I'm just going to increase the volume. Yeah, let me. Now is it okay? No, very, very soft. But can you hear me? Yeah, I can hear you very clearly. Okay. Yeah. Om Shanti. मधुबन मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? जी Okay. They can listen. So गुड इवनिंग, ओम शांति। सभी को आज के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे बीच सिस्टर अरुणा उपस्थित है। हम सभी सिस्टर अरुणा को वेलकम करते हैं। वेलकम सिस्टर अरुणा टू अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। You know, this is called as Orissa, and the center is in Bhubaneswar, the capital city of Orissa state. And now we are in a place center called as Patia. So welcome to that family of Baba. Okay, Sister Aroona, welcome. Thank you. Welcome And to thank Patia you for Center. inviting me. Yeah. So let Om me Shanti and good evening to everybody. let me introduce you. Okay. It's my privilege to be able to be with you today and to share. And I really thank Savita Ben for inviting me. Yeah, let me introduce you. Okay, जो अरुणा बहन है, जो सिस्टर हमारे बीच में है, वो लास्ट 34 ईयर्स से ज्ञान में है और उन्होंने 29 ईयर्स जॉब किया है लौकिक में। जैसे आप लोग जॉब करते हैं ना बाहर, ऐसे उन्होंने भी जॉब किया है। और उनके 4 लौकिक बहनें हैं, चारों के चारों बाबा के ज्ञान में हैं और उनके परिवार में भी लगभग 2-3 लोग इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं। तो ये जैसे अफ्रीका में जो पूरा हमारा रीजन है, अभी फिलहाल ये सेंचुरियन प्रेटोरिया करके स्थान पर अपनी सेवाएं देते हैं। विमेंस प्रोग्राम, कॉन्शियसनेस एंड कुकिंग डेमोज, वैल्यूज इन हेल्थ केयर, ऐसे जो ब्रह्मा कुमारीज के बाबा के अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है उसमें आप मदद करते हैं। तो ऐसे एक विशेष त्यागी तपस्वी सिस्टर अरुणा आज हमारे बीच है, तो हम सभी उनको वेलकम करते हैं। एंड वी हैव सिस्टर गुलाब विद अस एंड शी इज अ सेंटर इंचार्ज फॉर दिस सेंटर. Okay, so she will welcome you. Savita Ben, Not hi, audible. your sound is very soft. I can't hear at Why? all. Now can you hear me? No, very soft. And I've increased my volume to 80. It's 100. The volume is 100 actually. I made it to 100. I don't know. Let Okay. me change the microphone, this speaker maybe, and try. Am I audible now? Now? No. I can hear you. I don't know what is the problem. Okay. I can I'm just hear you wondering very. if I must put on a set of headphones as well. Am I audible now? Shanti, Sister Aroona? Something is not, your sound is just not coming through. Oh. I can't even hear anything now with the headphones. Okay, let's see. But anyway, I can hear you. shall I start? But Sister, my sound's coming through. Yeah.
Sister will welcome you. Sister Gulab, Oh. she is a center in charge and she will welcome you. Okay. Yeah. दीदी बोलिए. दीदी जी ओम शांति. Om Shanti. ओम शांति. आज हम बहुत खुश हैं. हमारे बीच में राज्योगिनी अरुणा बहन साउथ अफ्रीका से ये बेहद की सेवा देने के लिए हमारी पास वो बाबा की सेवा जो अचानक और वेभरेडी में तैयार है और पट्टे की तरफ से और मेरी तरफ से और बाप दादा की तरफ से अरुणा दीदी को बहुत बहुत स्वागतम स्वागतम स्वागतम. तो दीदी से आज नए नन्हा सा बच्चे को मुरली भी सुनाएंगे और वो अपना का जो एक्सपीरियंस है उसको भी थोड़ा सुनाएंगे. इसलिए मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत स्वागतम स्वागतम स्वागतम. ओम शांति. Om Shanti. Thank you, Ben. Yeah, she welcomed you on behalf of all this, on behalf of Bap Dada, herself, and all the students of that particular center. And they're very happy to have you today to that part of India, the northeast part. And they're eager to listen to your experience and also Murli from you. Thank you so much. And so sweet welcome to from Benji. Thank you very much. So what I'd like to really share about myself is, as you said, that we four sisters that are Indian, and my mum became a widow. My father passed away in 1977, left his body. So my mum was only 36 years old. Oh, okay. इनके जो परिवार है चारों के चारों बहनें बाबा के ज्ञान में हैं और इनके पिताजी ने 1977 में ही शरीर छोड़ दिया था जब इनके माताजी का जो उम्र है केवल 36 years. So in those very early days, females, mothers never went to work or anything like that. And my mum was very brave, very courageous. And she decided, no, she will take care of her daughters and bring them up. तो उन दिनों तो मन आप सोच सकते हैं ना 36 years की एक मदर है उनकी 4 बच्चियां हैं और उन दिनों तो जॉब करना या इंडिपेंडेंट हो जाना उस दुनिया में चलना वो भी इतना इजी नहीं था लेकिन इनकी मदर ने बहुत हिम्मत रखा और बहुत दृढ़ संकल्प रखा कि मैं अपनी चारों बच्चियों को अच्छे से पालूंगी और उनको बड़ा करूंगी. So we were very fortunate that she was very strong. And in 1985, two brothers were sent from London by Dadi Janki to open up the center. There were few souls that had gone to London in the earlier times, in the 80s, where they were invited by friends. And so they came into contact with the Brahma Kumaris. And then they said to Daddy, please send someone to do service in South Africa. So they arrived in 1985. Which place they arrived? Brothers. Which place? In South Africa, in Johannesburg. Okay. So South Africa from London. They came from London. Yeah. जो साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है वहाँ पर 1985 में जैसे लगभग सेवाएं शुरू हुई क्योंकि जैसे कुछ एक दो लोग जो साउथ अफ्रीका से लंदन गए थे तो उनको फिर दादी ने माना उनको वहाँ पर ज्ञान मिला फिर वो वापस आए साउथ अफ्रीका फिर उन्होंने दादी को कहा कि आप किसी को सेवा करने के लिए आप साउथ अफ्रीका भेजो फिर who came to South Africa to do service? Whom Daddy sent there? Daddy sent a brother Peter and brother Paul. तो दादी ने फिर दो भाइयों को ब्रदर पीटर और ब्रदर पॉल तो वो दो भाई गए साउथ अफ्रीका में सेवा करने के लिए. Yes, sister, continue. So my aunt, they rented a place in an area for, you know, in the early days when there was apartheid in South Africa, then Indians lived separately, whites lived separately, blacks lived separately. So everybody had their own place. And so the area where we lived
it was called Lenasia, the land for the Asians. Lenasia. Sister, the brothers one rented the place second. there. There is a request to change the headphone. I'll go back to the headphone which I was using before. Okay, sorry for the interruption. Am I audible to you, Sister Aroona? Am I audible? Can't hear anything. दीदी सुबह नहीं, दीदी सुनाई नहीं देते? Now am I audible? हाँ 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 दीदी, सुबह पता नहीं क्या करें। सुबह हाँ दीदी। नहीं दीदी, उनको नहीं सुनाई दे रहा है, सिस्टर को ना। अच्छा ठीक। Am I audible now? Now? I can hear slight sound. Okay, let's let's adjust with this, because with this they can listen to me properly, all the students. Okay, then it's fine. Yeah. No problem. Yeah. Because I can hear you, I'll translate properly. Okay. You have to adjust a little. Yeah, no, it's fine. Slightly I can hear, so it's okay. Yeah. Okay. So yeah, so my aunt went to the center, and some sisters were invited from the nearby countries like Zimbabwe and Bulawayo, and the sisters spoke in Gujarati. So my aunt invited my mom to come listen. ओके, तो लगभग इनका जो इनके फैमिली में इनकी जो आंट थी, उनको जैसे शुरू में ज्ञान मिला, फिर इनकी जो आंटी थी उन्होंने फिर धीरे धीरे इनको माता जी को भी, जैसे जिम्बाब्वे है, दूसरे जो अफ्रीका में अलग जो देश है, वहाँ पर जैसे धीरे धीरे बाबा की सेवाएं जब बढ़ने लगी, तो इनके परिवार को जैसे धीरे धीरे ज्ञान मिलने लगा। And so my mother started going to the center, listening to Murli. And we were still young. I had just started to work, and my other sisters were still studying. But the one thing the brothers kept on telling my mom, where are the children? Why you don't bring them? Every day she would come from Murli class and she said, oh, they're asking about you again. So we were saying, oh no, it's not for this Raj Yoga, it's not for everyone, it's only for old and widowed people. Because, you know, my mother was a widow and there were only mothers going to the center in the beginning, no young people. तो ये जब इनकी मदर सेंटर पे जाने लगी, तो जैसे वहाँ पर सेंटर पर जो थे, उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चियों को भी सेंटर पर लेकर आओ। तो ये जब मदर ने इनको कहा कि आप भी सेंटर पर चलो, तो ये तो यंग थे, ये बोलने लगे कि ये जो राजयोग वगैरह है हमारे लिए नहीं है, आप भले जाओ, ये तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए, हम नहीं आएंगे करके इन्होंने बताया। So like that, sometimes 6 months went, but daily my mother used to come back with a message, or the brothers are asking, where are you? So I was the eldest with the 4 sisters. Well, I'm the eldest. So then at that time, there were 4 cousins that were there staying with us. You know, Pratibha Ben, she's my cousin. Yeah. So she was staying with us, and so I said to them all, you know what? Instead of us getting a message every day like this, let's go and see what is happening. So we all, 8 of us went, and we said we 8. So if there's any problem, we are 8. So, you know, we will be strong against the brothers. So then we decided to go have a look. तो इनकी जो मदर इनको रोज बोलती थी कि सेंटर पर जो भाई है ना, आपको भी याद करते हैं, आप भी चलो थोड़ा बहुत देखो। तो इनको लगा ठीक है, चलो मदर इतनी बोल रही है तो जाके देखते हैं। एक सिस्टर प्रतिभा है जो बहुत ही पुरानी वहाँ की समर्पित टीचर है, तो इनकी कजिन थी, इनके घर में और भी कजिन्स आए हुए थे। टोटल 8 लोग थे, टोटल 8 लोग मिलकर के सेंटर पर गए और सोचा कि चलो 8 लोग है ना, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम साथ में तो है, 8 लोग करके ऐसे डिसाइड करके एक सेंटर पर गए। So it was really, I think Baba was
really pulling that he wanted these children to come to listen to him, to listen to what he has to say. And as soon as we got there, it was like, that was it. We just had to put our foot into the center, and then we knew that was it. So it took us about 2 months to do the course, all 8 of us, and but very beautiful way in which we were given the course, in a very playful way, because we were young, and so the brothers really took time and went through the lessons with us in a very playful manner. तो ये जो 8 के 8 बाबा के घर गए सेंटर पर, तो फिर बस बाबा ने जैसे इनको चुन लिया और इनको बहुत अच्छे से, क्योंकि यंग थे, बहुत एज भी इनका बहुत छोटा था, उन दिनों की बात है, 30-35 साल पहले की बात है। तो फिर वो जो सेंटर पर भाई था, इनको बहुत अच्छे से प्यार से प्लेफुल वे में थोड़ा खेलते कूदते जैसे इनको कोर्स कराया। फिर 8 के 8 ने कोर्स लिया बाबा का। ऐसे इनकी ये जो जर्नी है इस लाइफ में शुरू हुई। Yes. So 86, then we had already surrendered to Baba, although we were living at home, but full on at the center. And from the 8, the 6 survived, and the 2 brothers, they got married. So they didn't take, but so it was the 4 sisters and Pratibha and her sister. So it was really beautiful for us to grow up, in Baba's Gyan, grow up in it. It was like Baba was teaching us from a young age to include this Gyan, this knowledge in our life. So even when I worked, for the time that I worked, I used my badge. I couldn't wear white clothes, but my badge was there every day. I wore it. And how I could use this knowledge, because I used to work with people, and how I could use this knowledge and allow my virtues and my qualities to, when I interacted with people, so there was calm and peace and that. So what was your लौकिक job? What was your job, sister? I worked in the bank. ओके, तो इन्होंने बैंक में इनका काम भी था, लौकिक जॉब भी ये करते थे। 1986 में जैसे ज्ञान में चल पड़े, 8 लोगों ने जो कोर्स लिया था ना, उनमें से 6 लोग ज्ञान में चल पड़े, 2 लोग नहीं चल पाए आगे। तो इनको ये जो बाबा का ज्ञान मिला, बाबा का बैच पहन के अपने लौकिक जॉब में भी जाते थे, तो ये जो ज्ञान इनको मिला बाबा का, इन्होंने उसको लौकिक जो जॉब इनका था ना बैंक में, वहां पर भी जैसे इन्होंने प्रैक्टिकली उस ज्ञान को अप्लाई किया, कैसे बाबा जो गुण के बारे में बताते हैं, कैसे उन गुणों को यूज करना है। तो प्रैक्टिकल है ना, बाबा का ज्ञान भी है, जॉब भी कर रहे हैं, तो बाबा का ज्ञान इन्होंने प्रैक्टिकली अपने जॉब पे अप्लाई किया। And the one thing that for me was so clear, because I lost my Lockheed dad when I was very young. So when you were young, you feel that if you had your parents with you, that it's good. And so there was a bit of sorrow and sadness because I had lost my dad. But when I came into Gyan, and my first introduction of Baba as my father, everything just disappeared about the sorrow and sadness of having a father, because I knew that I have found my eternal father. So Lockheed father, there or not, doesn't matter, but forever I have found my father. Same experience here also. Yeah. तो इनको जब मेरा भी यही अनुभव है, जब बहुत बचपन में छोटे होते, तो जब पिताजी शरीर छोड़ देते, तो ऐसा लगता है ना कि अभी क्या है, हमको कौन संभालेगा। लेकिन जब बाबा हमको मिलता है और पता चलता है कि बाबा तो मेरा आत्मा का पिता है और वो अविनाशी है। ये जो पिता है वो कभी भी छोड़कर जा सकते, लेकिन वो जो पिता है वो अविनाशी पिता है। वो उसको जब हम पहचानते हैं, तो वो जो दुख रहता है ना कि मुझे फादर नहीं है, वो दुख जैसे धीरे धीरे चला जाता है। So that's why I, especially in today's Murli, when Baba was talking about, Baba said he is the father, the teacher, and the guru. Because Baba said Shri 108 Jagat Guru, that he's the only one that can have that title, and the only one that is true
father, true teacher, and true guru. So I really felt so, that deep inside feeling, that connection, this eternal belonging to one Baba, none other. जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि बाबा जो है बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, जो 108 जगत गुरु को भी हम याद करते हैं ना, तो उस बाबा को जब हम पिता के रूप में याद करेंगे तो पता चलता है कि कैसे वो हमारा अविनाशी पिता है। जैसे मेरा और उसके साथ का जो संबंध है वो कितना अविनाशी है, कितना गहरा है, कितना प्यारा सा वो संबंध है, वो हमको अनुभव होता है। So I just there was a few points that I had made note of that what really attracted me to Baba's Murli today, and that one question that was so deep is seeing what time is at the moment, what effort will we sensible children make? And so we can see how Baba is really fine-tuning the children to understand that doesn't matter even after this, what is happening in the world at this moment, this time period that the world is going through such time, that even after it's finished, whatever is going to happen in the world, it's changed. It's different. And Baba has made us understand through all these years of listening to Baba's Murli, he has made us understand, made us realize that it can never be normal. It can never be the same. That we have had change. There's some change that has taken place. तो जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि समय के हिसाब से हमको क्या पुरुषार्थ करना है। इस साल तो हम सभी ने ये अच्छे से अनुभव किया कि जो समय है, जो टाइम है, एक जैसा नहीं रहेगा, ये तो बदलेगा ही, है ना। हमने देखा कि 2020 किसको मालूम था कैसे चलने वाला है, 2020 हमको नहीं मालूम था। तो इसीलिए जैसे बाबा ने हमको पहले से ही तैयार कर लिया है कि ऐसा समय आने वाला है, उस समय के हिसाब से आपको अपना पुरुषार्थ करना है। तो ऐसे बाबा कैसे प्रिपेयर करता है, वो आज के मुरली से इनको वो जो पॉइंट है बहुत अच्छा लगा। So just this aspects about what will sensible children do, and the point of remembering Baba, making sure that we have Baba's remembrance, that we understand ourselves as souls. And when we've imbibed this knowledge, the sensible children is going to share this knowledge. They become the embodiment of it, and then they're going to share this knowledge. Because Baba said that each and every child of mine must get my message, must get the message of who is it that is the Supreme Father, the Supreme Soul, the God of the Gita. They have to know that it's not Krishna and that it's Shiv Baba that is the God of the Gita. तो जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, सेंसिबल बच्चे माना कौन है? सेंसिबल बच्चे माना वो ही है जो इस ज्ञान को धारण करके दूसरों के साथ ये ज्ञान को शेयर करते हैं। क्योंकि आज बाबा ने कहा कि सबको ये मैसेज मिलना चाहिए कि परमात्मा का असली पहचान क्या है, गीता का भगवान कौन है, कृष्ण नहीं है, स्वयं परमात्मा निराकार है। ये मैसेज सबको मिलना चाहिए, ये आज के मुरली में बाबा ने कहा है। And if we think about it, is that we say that we have to be sensible. Even in the world, that people talk about sensibility, but they don't know the real from which what is going wrong in the world and what is real. Because the sensibility is only coming into us when we understand who we are and who we belong to. I mean, this lesson that Daddy has made so firm is that every time she said Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, she said, who am I? Who do I belong to? And what do I need to do? That was her ultimate message for us to really deeply understand. Because when we feel that we become sensible children of God, is when we got the understanding right of who we are, who we belong to, and what I need to do. तो जो सेंसिबिलिटी की बात बाबा करते हैं, दुनिया वाले भी बोलते हैं सेंसिबल के बारे में, लेकिन गलत क्या हो रहा है संसार में यही उनको मालूम नहीं है। जैसे 3 बातें दादी ने हमेशा, जानकी दादी हमेशा कहा करते थे कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। ये तीनों बातों को समझना और दूसरों को ये समझाना, यही सेंसिबिलिटी है।
And so the other thing Baba deeply brought up was the purity aspect. And Baba was saying that even the great sannyasis, they never had the courage, although they left their homes, because their attachment to their physical family is something they couldn't deal with. So even while staying with their family in their home, they couldn't detach themselves. And so Baba really made it so clear that aspect of purity, the example of the lotus flower. So Baba said, because we children understand what purity really is. जैसे आज बाबा ने पवित्रता के बारे में भी कहा, सन्यासी लोग भी प्योरिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन परिवार से थोड़ा सा डिटैच हो जाना उनके लिए इजी नहीं हो जाता है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि कमल पुष्प समान हमारा जीवन होना चाहिए। बाबा ने कभी नहीं कहा कि परिवार को छोड़ दो, कमल पुष्प समान हमारा जीवन हो, परिवार में हमको रहना है, परिवार को संभालते रियल प्योरिटी क्या है, असली पवित्रता क्या है, उस पर फोकस करना है। So Baba gave us a very beautiful title of being Mahavir, because we are brave to be able to stay in this family path, in our family, taking care of our family, but yet to remain very detached, remain pure. And through that practice of our purity, Baba said, we will achieve the kingdom, we will become like Narayan. तो जैसे आज बाबा ने हम सभी को टाइटल दिया कि महावीर है, खास करके आप लोग जो घर गृहस्थ में रहते हैं, क्योंकि महावीर माना ब्रेव है, हिम्मत वाला है, क्योंकि परिवार में रहते इसको फॉलो करना, फैमिली पाथ जो आप लोगों का है उसमें रहते भी डिटैच रहना, ऐसा पुरुषार्थ जो करता है वो लक्ष्मी नारायण जैसा बनी जाता है। ऐसे बाबा ने हम सभी को आज टाइटल दिया कि महावीर है। Savita Ben, lift your mic more towards your mouth, the mic, yeah. Because it went soft. It was, I could hear now. It's okay in the beginning, Yeah. Okay, thank you. So really that aspect of purity was attracted me very much in the Murli today. And then Baba also was talking about Mana Baba, connect your mind to mind, make that connection from your mind to his mind and keep that current continuously flowing. So it was a very beautiful explanation of Mana Baba. I like that very much. तो जैसे आज के मुरली में बाबा ने मन मना भाव के महामंत्र को भी दिया है। मना बाबा कहते मन को मेरे में लगाओ, मन को मेरे साथ कनेक्ट करो, ताकि जब कनेक्शन हो जाएगा बाबा के साथ तो क्या होता है, करंट आता है ना। तो वो पॉइंट इनको आज मुरली में बहुत अच्छी लगी, कैसे पवित्रता की बात आज बाबा ने समझाया है। Okay, and then again Baba used the example of the snake shedding its skin. And when it got a new skin, it didn't even bother about the old skin. So Baba is saying that if we connected to know that in Sat Yug we're going to get a new body and everything new, why are we worried about this old world, this old body? So a very beautiful example of the skin that the snake sheds. When the skin is old, it doesn't even bother about it. So for ourselves, that we need to make sure that we keep that consciousness in our mind that we are going to the new world, we're going to get a new pure body. So why worry about the old things of this world and this old body? तो जैसे आज बाबा ने मुरली में सांप का एग्जाम्पल दिया है, सांप का मिसाल दिया है। सांप क्या करता है, पुराना छोला छोड़ देता है, नया धारण करता है, उसकी विशेषता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये भी जो बॉडी हमको मिला है इसको छोड़ देंगे, पुराना खाल छोड़ करके नया हमको मिलेगा सतयुग में। सांप को क्या है, जैसे उसने पुराना खाल छोड़ दिया ना, नया उसको मिल जाता है। तो पुराना जो खाल उसने छोड़ दिया उसके ऊपर ही उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसे हमको भी जब नया शरीर मिलेगा सतयुग में, हम भी उस नए शरीर को एंजॉय करेंगे, पुराने के बारे में हमारा कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हमको सब कुछ वहां पर नया मिलने वाला है। And Baba said that the new skin will be prepared and you will only be ready until before you reach your karma teeth stage. So Baba said the skin
won't be ready until you reach your karma state. So we have to forget all of this and finish it. Otherwise, we're not going to go. या तो ऐसे नहीं मिलेगा नया जो शरीर हमको मिलने वाला है सत्युग में, हम ऐसे नहीं जा पाएंगे, हमको कर्मातीत बनना पड़ेगा। तो कर्मातीत माना क्या है, इतना हम कर्मों में अटैच हो गए ना, उससे हमको डिटैच होकर के सभी व्यक्ति वस्तु वैभव से डिटैच होकर के उस स्थिति को हमको पहुंचना पड़ेगा, तब जा करके हम सत्युग में जाने के लिए लायक बनेंगे, ऐसे नहीं बन सकते हैं। So when Baba says that I've come to give you your inheritance, do you accept it? तो बाबा कहते हैं मैं आप लोगों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, आप लोग उसको स्वीकार करोगे? किया है स्वीकार, ऐसे बाबा ने आज पूछा है। Or do we think, oh no, Baba is just coaxing us to make effort, and he's only coaxing us to say, oh, there's the golden age, here, you're coming. But do you truly accept it right now that Baba is come to give us the happiness of the golden age, that inheritance, like how they show in Loki, Krishna holding the like brings a gift of heaven in his hand. You know, in Loki they always show that. So that same image, can you really feel and accept the fact that Baba is coming to give us the inheritance? तो जैसे हम जब सुनते हैं ना कि सत्युग आएगा, बाबा सत्युग की स्थापना करने आया है, स्वर्ग की वर्षा देने आया है, तो लगता है ना पता नहीं सब सच में बाबा ये देगा या नहीं देगा, ऐसे फील होता है। सच में फील होता है कि बाबा स्वर्ग का वर्षा देने आया है, उसको आप सभी ने दिल से एक्सेप्ट किया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। So in accepting and having faith that Baba has come to give us the inheritance, and it's my inheritance that Baba has come to give. It is my birthright. Baba always says it is your birthright. The inheritance is your birthright. So really, to understand it on a very deep level, that we need to have the dharana about the inheritance, so we can use the inheritance now in order for us to change our life. Yeah. तो बाबा is it जो visible? तो बाबा जो देने आया है वो मुझे देने आया है, मेरे लिए बाबा आया है, जो भी बाबा देने आया है मुझे देने आया है, वो अनुभव करना है, अभी ही करना है। और दूसरी बात तो दिखता भी तो है ना, बाबा जैसे खुशी देने आया है, शांति देने आया है, अनुभव भी तो होता है, मुझे देने आया है, मेरा वर्षा है, ये हम अनुभव करें। And know that your name is written there already. You know, when people write in their will the name, that this must be given to this person. So can we feel that my name is printed there, and that is my inheritance, it's my birthright. So really that we need to have that dharana, that we use this all the time and remind ourselves of what is it that we're getting, and that it must be visible. You know, Baba always uses the analogy of the trees of the golden age is visible. So is that visible to us, that that is my inheritance, and I'm going to get that inheritance? तो ये हम सभी पक्का कर ले कि बाबा स्वर्ग का वर्षा देने आया है, मेरे लिए आया है। जैसे बाबा सत्युग के बारे में मुरली में बात करते हैं ना, तो हम अनुभव करें, क्योंकि चारों तरफ ये जब कलयुग की दुनिया हम देखते हैं तो कभी कभी थोड़ा जैसे डाउट भी आ जाता है कि क्या सच में सत्युग आने वाला है, क्या सच में हम वहां जाने वाले, सब संकल्प आते हैं। लेकिन हम विश्वास रखें, निश्चय रखें कि ये जो वर्षा है बाबा मुझे देने आया है, ये हम अनुभव करें। The other aspect of the Murli was the purification of the world, because Baba always says that you, my children who have truly recognized me, are the ones who's helping me purify this world. And so this very deep feeling that when we wake up in the morning at Amrit Vela, that when we connect to Baba and Baba gives us the current and the power, and we then take that current and that power and we give it to the world, give it to the environment, give it to nature, give it to the elements, that through our intense tapasya and connection with Baba, that we are able to put, and Baba said today, the power of yoga is the only one thing that can help do anything and fix anything. So
know that through the power of our yoga that we are helping to purify the world. So feel that energy that is coming from Baba to you, through you, and it is slowly and for surely going into the world. And I like this aspect of how, I'm not sure if you read any of Brahma Baba's diary notes that he made before he got Shiv Baba's message. You're asking me? Baba, yes, sorry. I think so, because Lachu Dadi used to have so many things in Pandav Bhavan. Yes. Lachu Dadi. Yeah, she used to show and share some things. So we were in this lockdown. Somebody in London shared some of the what Baba had written, and it wasn't like Shiv Baba just entered Brahma Baba and took over and said, now I'm going to give this knowledge. But it was a slow process of transforming the soul, because it was 3 or 4 years before Brahma Baba got the visions. So in that years, he was actually talking to his mind and his intellect. And he was telling his mind, what are you doing? Why are you making mischief? You shouldn't be doing this and you should be doing that. And he was like almost, being the stick. Baba said today, if anybody impure comes to you, take the stick and chase them away. So he was using you like a stick for his mind, constantly checking what is this mind doing. So let me translate this. जैसे ये बता रहे थे कि प्यूरिफिकेशन जो संसार की जो स्वच्छता है, जो माना पूरे वर्ल्ड को हमको पवित्र बनाना है ना, तो कैसे बाबा हमारे द्वारा वो करता है। अमृत वेले से हम वो अनुभव करते हैं, अनुभव करना भी चाहिए, गहन तपस्या भी करनी चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ योगा, योग की शक्ति से ही जो होना है वो होना है, पवित्रता की शक्ति से ही ये सब होना है। तो कैसे वो एनर्जी हम बाबा से लेते हैं, पूरे विश्व को देते हैं, जिसके आधार पर ये प्योर होगा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने, जब ब्रह्मा बाबा थे तो कुछ डायरी में बाबा ने कुछ बातें लिख के रखा है जो लंदन से इनको कुछ दिनों से पहले मिला है। तो उसमें जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, उसके पहले ब्रह्मा बाबा अपने को बहुत तैयारी करते थे कि ज्यादा मेरा मन बुद्धि मुझे नहीं भटकाना है, मैं जो सोच रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ऐसे ब्रह्मा बाबा का एक बहुत स्लो प्रोसेस में बाबा ने अपने आप को परिवर्तन किया। उसके बाद शिव बाबा ने उनके तन में एंटर करके तब से सारी कहानी जो है वो शुरू हुआ है। So it was a preparation of gentleness, and through gentleness and slow process before the incarnation happened. And so just this aspect of how the surrender, and how Brahma Baba, just when he realized Shiv Baba, who is Baba and what Baba is come to do, he just immediately surrendered. So just this feeling of such power that Brahma Baba accumulated, that at the time when he needed to make a decision and realization, there was no doubt, or what am I doing here? Why should I be doing this? Nothing like that. So I really feel that the Brahma Baba soul, but such a powerful soul, but also showed us the intensity of effort that he made. It wasn't that he just got the title, but really worked at it, and in such a beautiful manner this transformation came about. तो जैसे ब्रह्मा बाबा निमित्त बने ना, शिव बाबा का रथ बने ब्रह्मा बाबा, ये सारा कार्य कराने के लिए बाबा निमित्त बने। तो कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को समर्पित किया, कैसे रियलाइज किया कि शिव बाबा मेरे तन को यूज कर रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं था ना, कोई बाबा को कभी संशय नहीं हुआ। कितने पावरफुल ब्रह्मा बाबा का तपस्या था, कितना पुरुषार्थ अच्छा था, तभी तो ब्रह्मा बाबा बने, तभी तो इतना बड़ा यज्ञ को बाबा ने संभाला, चलाया, आगे बढ़ाया, क्योंकि उनका पुरुषार्थ भी तो ऐसा था। कैसे बाबा ने अपने आप को तैयार किया यज्ञ की सेवा के लिए, तभी तो बाबा बने। So I really feel that whatever we want to achieve, whatever we want
the status, whatever we think we feel we want. Pilgrimage of remembrance is so important, the power of yoga, that if we can really accumulate and connect to Baba on that level and stay on that pilgrimage of remembrance, because then we will reach our karmatic state, we will attain everything, our inheritance, whatever Baba talks and describes about the inheritance and the golden age, we're going to experience it. So really, this is our effort, is to stay on the pilgrimage of remembrance and make our power of yoga very, very powerful. तो जैसे कुछ भी हमको पाना है, अभी भी संगम युग में पाना है, आने वाले सतयुग की दुनिया में भी उसको हमको पाना है, उसका आधार है जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना जितना मेरा जो मन बुद्धि बाबा के साथ कनेक्ट रहेगा, उतना उतना हम पा सकते हैं. उसका आधार है योग की शक्ति, उसका आधार है बाबा के साथ मेरा संबंध, उसी याद की यात्रा में मुझे रहना है, तब हम पा सकते हैं. So Baba used this analogy of Mosi ka ghar. So we know when we go to Mosi's house, then she'll give us nice things to eat and coax us into doing whatever we want to. So Baba said it's not so easy going to it's not like going to your auntie's home, because your auntie spoils you a lot, isn't it? So really just to say that that effort that we need to make, it will become easy when we become so strong within ourselves, and we'll never feel like we're making efforts. Yeah. एक्चुअली बाबा मुरलियों में कहते हैं कि मेहनत भी करना है, ऐसे नहीं कि मासिक का घर जैसे गए तो उतना इजी भी नहीं है, मेहनत करना है. अगर हम स्ट्रांग है तो वो भी इजी हो जाएगा, बाबा की याद से सहज हो जाएगा, क्योंकि आंटी के घर हम जब जाते हैं तो कितना वो हमको खिलाती है पिलाती है, ईजी है आंटी के घर जाना, ऐसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं. लेकिन हमको पुरुषार्थ करना है, मेहनत भी करनी है. सिस्टर अरुणा, Yes. We have some kind of new students here. Yes. So I would like to help them with how to meditate, and any kind suggestions you would like to share with them, how to have powerful yoga. Savita Ben, I'm not hearing you so well. Sorry, man. We have some new students. Yes. And I want you to share some thoughts or suggestions about how to meditate, how to come closer to Baba. Okay. Yeah. Okay. So for me, I think one method that I really use about meditation is the attainments and the inheritance. So when I keep reminding myself of what Baba is giving me, so that little effort that I'm making in the mind, I'm keeping at attention on what I am keeping in my mind. And so when I allow my mind to rest on the inheritance and the attainments, then it's changing and it's taking away my mind away from the unnecessary, the wasteful thinking, the negative thinking, the gossip, or whatever it is. So that is one way of keeping the mind on track and attention. Okay, तो हमने इनको क्वेश्चन पूछा कि जैसे हम आप सब कुछ नए भी जुड़े हैं, कैसे अच्छे से मेडिटेशन करें. तो इन्होंने यही कहा कि परमात्मा से मुझे क्या मिल रहा है, वो प्राप्ति क्या है, उसको हम याद रखें. उसके ऊपर अगर मेरा अटेंशन रहेगा तो बाहर की अननेसेसरी चीज़ें जो है उसके ऊपर जो मेरा फोकस है वो अपने आप कम होता जाएगा. वेस्टफुल जो हम करते हैं, व्यर्थ बातों में हम जो जाते हैं, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि बाबा मुझे क्या देने आया है, अगर उसका मुझे अच्छे से अवेयरनेस से अटेंशन है तो प्राप्तियों का अनुभव होगा. फिर बाबा के साथ संबंध जोड़ना, नजदीक जाना भी ईजी हो जाएगा. And then the other method is to take at least 3 points from the Murli, short little points which touched you, which made you feel some excitement or intoxication or happiness. So just to keep those 3 points in your day and keep reminding you. And when we have just a moment, just a second, and we just
reflect on those 3 points and just allow them to work through our mind. So during the day, if I can take time, just a little second, a little moment in between, and we can make it about 4 or 5 times. So what is happening is that we then deepening the intoxication, we are deepening the excitement of the point, and also we're thinking about it. So then we accumulating, like how Baba said, the truck bird that collects drop by drop and accumulates. So we must do that with our mind. So during the day, to pay attention to what at least 3 points from the Murli at least. तो इन्होंने कहा कि हम सभी ये प्रैक्टिस करें, कम से कम मुरली से 3 पॉइंट हम लेंगे। एवरी डे की मुरली तो हम सुन ही रहे हैं, आगे भी हम सुनेंगे। उसमें से हम 3 ऐसे पॉइंट लेंगे जो हमको पसंद आया हो, जो हमको कनेक्ट हुआ हो, और उन 3 बातों को हम सारा दिन याद करते रहेंगे, जिससे मुझे उमंग उत्साह मिले, जिससे मुझे शक्ति मिले। कोई भी 3 पॉइंट हम जैसे मुरली सुना पढ़ा वो दिमाग में यहाँ बिठा देंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे और उसको यूज करते रहेंगे, तो धीरे धीरे जैसे हमारे में उन्नति आती जाएगी। And so often what we do is we keep saying, I can't remember the points in the Murli. I can't remember the points in the Murli. So then what happened? Even the point that you might remember, you even forget that because we keep saying we don't remember. So that's why it's so important. And little, like a post-it or a little sticker, because I mean, so many of us are working with computers. We can stick it on our screen or our phones. If we just note down these 3 points on the phone itself, we can always refer back to it, because sometimes people don't want to keep a piece of paper. But when we keep the points, then we're not saying to our mind, oh, I don't remember. What did Baba say in the movie today? But I've made note of it, so I can refer to it. And I don't have to keep like memorizing it because I've written it down. So I just refer to it all the time. Go back to it and go back to it. So then it will start to sink in our mind slowly. तो इन्होंने कहा कि 3 बातें जो मुरली से हमको लेनी है हर रोज, जब तक हम जिएंगे तब तक 3 बातें रोज मुरली से लेनी है। क्योंकि हम ऐसे कहते हैं ना, मुरली के पॉइंट याद नहीं रहते, मुरली भूल जाते। 3 पॉइंट हम लिखे रखे कहाँ, तो एक पेपर में, या वो भी मुश्किल लगता है तो आजकल तो सबके पास मोबाइल है, कहाँ ना कहाँ 3 पॉइंट हम नोट करके लिख दे सवेरे सवेरे, और उसी 3 पॉइंट को बार बार रिवाइज करें, याद करें, रिपीट करें, यूज करें, तो मन में वो बातें फिट हो जाती है ना, तो फिर अच्छा लगेगा, पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ सकेंगे। And what is happening is that we're saying that we don't want our mind to think too much. We want our mind to be empty. Oh, I can't concentrate. I can't do this. And what we're doing is that we are not filling our mind and our intellect with gyan. Because what is happening is that, yes, we have before gyan, whether we studied or whatever we're doing, we have all of that information and knowledge in our mind and our intellect. So it's not about emptying the mind, but changing and replacing the things of what now I understand after gyan. Because often I find that people are trying to empty the mind of what information they already gained. So now they gain this knowledge and they say, no, but I got all of this. But it is not about emptying it and not about, learning. It's actually just as I practice and I understand this one point, then I change that understanding from what I understood previously. So this point about I am the soul, not the body. So if I keep now this information and I keep reminding myself I am the soul, not the body, and I start to experience myself as the soul, then it's going to change that which I had before in my mind, that I'm the body and I have a soul. Yeah. So that's what we have to do. जैसे मन है, हमारा मन है, बुद्धि है, कई बातें ऑलरेडी हमने है इधर,
तो इन्होंने कहा कि ज्ञान से उसको हमको भरना है। ऑलरेडी कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऐसे नहीं उसको निकाल देना है। इन्होंने कहा कि रिप्लेस करना है हमको। जैसे हमको पता है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। ये जैसे जो पुराना हमारा जो बिलीफ है, पुराने जो हमने बातों को जैसे विश्वास करके रखा है, उनको रिप्लेस करना है। तो बाबा की बातों से जब हम रिप्लेस करेंगे तो फिर हमको जैसे शक्ति मिलती जाएगी। And what I find is that we mustn't sit for long periods of time, especially when we're learning to meditate. We're saying, oh no, I can sit for half an hour, I can sit for 1 hour. But what is the quality of the thinking? So if we shorten the time period that we sit for meditation, and if we create a drill for ourselves, like how Bab Dada has given us in the Aviyek Murlis, the drills. So we can create a drill for ourselves. And we understand how our mind and intellect work. We understand how we actually function ourselves. So it is important that from that basis, that we create something which we know we understand and which we know we will practice, because I'm creating it for myself. So we mustn't get lazy and say, oh, well, it's already there, so I'll just use it. No. For yourself, create it. And as you even write a commentary for your own self, you know how easy it becomes then for the mind to focus, because you've written and you understand what you've written and you've experienced it while writing. You've experienced it. So when you're sitting for meditation and you recall what you've written, the experience is going to come back to you. So Yeah. we must create drills for ourselves. Short, 3 minutes, 5 minutes, and you can increase it as you feel that you are now feeling that you're meditating. Yeah. तो इन्होंने कहा कि शुरू में आप अपने लिए ड्रिल्स आपको क्रिएट करना है, भले 3 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, 4 मिनट का, खुद के लिए कमेंट्री लिखने की मुझे कैसे जैसे हम भी कह रहे थे ना कि लिखना बहुत ज़रूरी है। लिख के प्रैक्टिस करने से और अच्छे हमको अनुभव हो जाएंगे। तो ड्रिल जैसे बाबा ड्रिल हमको कराते हैं, तो अपने लिए हम वो बनाएं, धीरे धीरे छोटे छोटे बनाएं, भले जो हम समझ सकते, जितना हम समझ सकते उतना लिखे, प्रैक्टिस करें, थोड़ा थोड़ा टाइम ही सही, फिर धीरे धीरे हमको टाइम इंक्रीज करते जाना है, फिर धीरे धीरे हमको अनुभव भी होता जाएगा। And one last point is that when we are busy with our activities, so whether it's a job or whether it's doing housework, whatever we are doing, is the mind, where is the mind? Is keeping attention that where is the mind going? Where are the thoughts going? Because then we have to keep pulling it back and aligning it to that which is our authentic self, our truth. We must just keep bringing it, because when we do that during the day, when we are busy with karma yoga, whatever activities, whatever we are busy with, but if we keep attention on the mind, because you know that story about the genie. This man was given a genie, and he was told that he has to keep the genie busy, because if he doesn't keep the genie busy, the genie is going to eat him. So he said, but I don't have a lot of work to give him every day, so what do? So he got a step ladder, and he told him to climb the step ladder, go up and down, and that avoided. So we have to think of methods, and we know ourselves. We know ourselves, so we create the methods which we can adopt, we can keep, because we've done it for ourselves. तो इन्होंने कहा कि हम सभी को मालूम है, दिन में हम बिजी रहते हैं, किसी को खाना बनाना है, किसी को अपना जॉब करना है, किसी को अपना काम करना है, हम बिजी है सारा दिन। तो थोड़ा अटेंशन हम रखें बीच बीच में कि कहाँ मेरा मन भाग रहा है, कौन से संकल्प मेरे मन में चल रहे हैं, कहाँ मेरा मन भाग रहा है। तो एक जिन का हम एग्जाम्पल देते हैं कि उसने कहा कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं खा लूंगा आपको। तो उनको काम दिया कि सीढ़ी चढ़ो उतरो, माना कुछ तो कहा, तो मन को थोड़ा सा हम कंट्रोल करें, अटेंशन दे कहाँ है भाग रहा है, बाबा की बातों में मन को बिजी रखे तो मन इतना भागेगा नहीं। So yeah, Sister last Aroona, point about the blessing, I like the slogan, the alankar and ahankar. So the decoration, so we must be decorated
with all of Baba's beautiful, all of the qualities and the virtues. And so we will let go of the ego, the ahankar. Thank Yeah. you. जैसे आज बाबा ने कहा अलंकार और अहंकार, जो स्लोगन में जितना अहंकार तभी जाएगा हमारा जब हम बाबा के जो गुण शक्तियों से अपने आप को अलंकार करेंगे, तो अहंकार अपना चला जाएगा. सिस्टर अरुणा, हाउ मेनी centers in Africa, how many countries have been served until now? The whole of Africa, Yeah. there's about 56 countries. Service And done. Baba's Yeah. centers are in about 42 countries. Okay. So South Africa is right at the bottom. It's the tip of Africa. South Africa is on the tip. Okay. So we have about five centers and about 10 Gita Patshalas. Okay. तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका में लगभग 40 देशों में सेवा हो चुकी है. और ये जो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका के टिप में है, एकदम ऊपर है. वहाँ पर जैसे 5 सेंटर है और 10 गीता पाठशाला हम कहते हैं, जहाँ पर छोटे लेवल पे क्लासेस चलते हैं. तो ऐसे वहाँ पर साउथ अफ्रीका में सेवाएं हो रही है. So South Africa is at the bottom. ओके, बॉटम. ओके, Not the top. ओके, अफ्रीका का जो मैप है उसमें अगर हम देखेंगे तो साउथ अफ्रीका जो है नीचे टिप पर है, नॉट ऊपर, नीचे. And Yeah. the tip of the bottom, the South Africa, it's called Cape Point, where the Atlantic and the Indian Ocean meet. There's a point where the two oceans meet. That's in South Africa. Okay, so is there any center or something like that in Cape? So Is there any Baba center service going on in that point? in Cape Town, yes, but not Town. at that particular point, because that's a distance from the point. So it's about 2 hours journey from the center. Okay. तो जो एकदम नीचे का पॉइंट है जहाँ पर अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का मीटिंग होता है, उसको केप बोलते हैं. वहाँ केप टाउन है. वहाँ पर भी जैसे उस मीटिंग पॉइंट से 2 घंटे की रास्ते पर बाबा का जो सेंटर है वहाँ पर है, वहाँ सेवाएं हो रही है. So Daddy Gulzar went to Cape Point to see where the Atlantic and the Indian Ocean meet, and Daddy Daddy Janki. तो दादी जानकी और गुलजार दादी दोनों ने वो जो दोनों अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन का मीटिंग पॉइंट है ना, वो पॉइंट देखने के लिए दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी भी गए हैं. तो blessed, you are blessed to have them, Yes. right? We've had Daddy Prakash Mani twice, Daddy Gulzar once, Daddy Janki came several times. Ramesh Bhai was here, Nirver Bhai was here, Bridgemohan Bhai, Jagdish Bhai. So we've had lots and lots of the seniors visit us. तो माउंट आबू से, मधुबन से सभी दादियाँ, सभी सीनियर्स भाई, निर्वेर भाई, ब्रिजमोहन भाई, रमेश भाई जी, जगदीश भाई जी, सभी वहाँ पर गए हैं सेवाएं करने के लिए. तो जैसे अफ्रीका में कितनी सारी सेवाएं हो रही है. और यू आर आल्सो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टार्ट सर्विस इन अफ्रीका. तो सिस्टर भी जैसे अफ्रीका में जब सेवा शुरू हुई ना, शुरू में जो not Africa, South Africa. साउथ अफ्रीका. ओके, Yes. साउथ अफ्रीका में South Africa is a country in Africa. जो अफ्रीका है, कॉन्टिनेंट है, उसमें साउथ अफ्रीका एक देश है. उस साउथ अफ्रीका देश में जब सेवा शुरू हुई, सेवा जब शुरुआत में जो टीम थी उनमें सिस्टर भी एक है जो निमित्त बने वहां पर सेवाएं शुरू करने के लिए. Yeah. What happened was when Vedanti Ben and Shilu Ben were first sent to Africa to do service, because of the black and white problem in South Africa. And Mahatma Gandhi, when he came, and at that time he also talked about that Indian problem with the whites and Indians and the blacks. Then India had sanctions against South Africa. So anybody who had an Indian passport couldn't come to South Africa. In those days.
Yes. in those So days. that's why Vedanti Ben and Shilu Ben couldn't come there. Okay. It was in which year? This was in which year? So the apartheid ended in 1994. Okay. तो जब अफ्रीका में सेवा करने के लिए वेदांती दीदी और शीलू दीदी है हमारे सीनियर्स है उनको भेजा गया, लेकिन वहां पर इंडियंस और जो ब्लैक एंड वाइट्स होते हैं ना उनके बीच में लड़ाई चल रही थी, जो महात्मा गांधी जी भी जैसे हम जानते हैं उन दिनों की बात है। तो इसीलिए इंडिया के जिनके पास भी पासपोर्ट था वो अफ्रीका नहीं जा सकते थे। तो ये जो बात है वो 1994 में खत्म हुई, उसके बाद कोई भी फिर वहां पर जा सकता है अभी। Yeah. So I think Shilu Ben and Vedanti Ben had come to Africa around 76. Okay. 75, 76, yeah. तो 75, Yeah, so 76 they had gone में to different countries in Africa, Mauritius, Zimbabwe, and a few places around Nairobi, Kenya, and all of those places. But they couldn't come to South Africa. ओके। Yeah. तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अलग अलग देशों में गए शीलू बहन जी और वेदांती दीदी। मॉरिशस है, जिम्बाब्वे है, केन्या है, लेकिन साउथ अफ्रीका नहीं जा पाए क्योंकि वो लड़ाई चल रही थी ना उस समय। या Anything else? Any questions? किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सिस्टर से। बहुत अनुभवी सिस्टर आज हमारे बीच में साउथ अफ्रीका से मौजूद है, तो किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम बाबा को याद करके पूरा करेंगे। Everyone is happy. They are sending messages that Okay. beautiful explanation of today's Murli. So they have enjoyed. Thank you to Savita Didi. Baba. Thank you for accepting and being with us. And thank you for the opportunity. Yeah, I Gulab think, they said one advantage of this lockdown disastrous thing is that Brahmin family is connected. Yeah. So we have to make our connection to our family so that when we start in Satyug, then we'll be friends already. Yeah, very true. Gulab Didi, thanks बोलेंगे दीदी को? You know, do you know about this state, Orissa? Orissa state, have you heard? No? I remember Orissa state. I was in Madhuban when the earthquake happened. Okay. Yeah. Okay, so it's a northeast I state. We were in Madhuban and they were talking about the earthquake and all of that that had happened, and like so much, help was going in. Have you ever been to this place now? No. Through Zoom, you visited this place today. Yes. Because we saw a lot of pictures when we were in Madhuban that they were showing of the earthquakes and all the help and the Brahmin family, and how they were assisting everybody and things like that. But physically we haven't, because we used to have very short leave from work. So it would just give us enough time to go to Madhuban and come back. Yeah. So Didi is here. She will say thanks to you on behalf of the... Didi बोलिए. दीदी ओम शांति। ओम शांति बहन। आज बहुत खुशी है, आप इतना सेवा दिए हैं, हम भी बहुत खुश है, सभी भाई बहन भी बहुत खुश है दीदी। और आपका जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव है ना, तो इतना हमको अनुभव कराया, बहुत बात मत पूछिए, तो इतना अच्छा लगा, बहुत खुश लगा हमको। तो इसलिए बाबा की सेवा की और बाबा की तरफ से और हमारी परिवार की तरफ से तो आपको बहुत बहुत दीदी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू। धन्यवाद। बाबा हमारा बड़ा टीचर और फादर और सदगुरु, वो हमने सिखाया तो हमने शेयर किया। जी, परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा को सिखाया ना। तो आप सभी को भी धन्यवाद जो टाइम पर आए और क्लास का लाभ लिया। अभी हम बाबा को याद करके सेशन को कंप्लीट करते हैं। विल सिट इन साइलेंस फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड फिनिश, एंड कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। थैंक यू।
Thank you so much. Om Shanti. Shanti. Good night. Good Thank you night. so Thank much. you. Om Shanti. Thank you, Baba. Thanks, बाबा। तो कल शाम को मिलते हैं सभी को। ओम शांति। 6 बजे कल शाम को।